as the biomolecules. For example, nucleic acid forms the proteins and then vitamins. So these are all the biomolecules, and they build up the living system. They build up the living system and responsible for their growth and maintenance. The sequence that relates biomolecules to living organism is, for example, from the biomolecules we will go to the organelle, and then organelle to cells, and then cells to tissue, and then tissue to organs, and then organs to living organism. So carbohydrates is the first one that we are going to discuss in this video. So carbohydrates is also a biomolecules. Carbohydrate is also a biomolecule. So what is carbohydrates? So carbohydrates is generally optically active polyhydroxyaldehyde और कीटोन. सी देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास है वो क्या है कि बेसिकली हम उसको बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ही बोलते हैं. For example, I have a compound that is a CH2OH. CH2 not CH2OH. I am taking another glucose. I am taking the glucose part here. The first basic is the glucose. So C double bond OH, then COHH. If I am taking the simple glucose, the structure of glucose is like that. Containing the 6 carbon chain, that is the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So basically this is your aldehydic part, this is your aldehyde part, and we are saying that this compound is aldehyde. So carbohydrates is basically what? It's basically polyhydroxy compounds, because there are many hydroxy group present in this. So these are polyhydroxy compound of aldehyde, and ketone, because in the some like fructose we have carbohydrates, fructose, so which contains the carbonyl group, that is a ketonic group, So these are basically polyhydroxyaldehyde and ketone. It means ऐसे aldehyde और ऐसे ketone which contains some polyhydroxy group. So carbohydrates optically active. Carbohydrates are basically what? Optically active polyhydroxyaldehyde, that is known as the aldose, or ketone, that is ketose, or compound which on hydrolysis give these unit are known as the carbohydrates. या फिर ऐसे जो compound जो hydrolysis होने के बाद इस type की units देते हैं, तो that is also known as the carbohydrates. For example, if I am taking the sucrose, so basically on when sucrose goes on hydrolysis, it gives you the glucose and fructose. It gives you a mixture of glucose and fructose. So glucose and fructose are also polyhydroxyaldehyde. These are also polyhydroxyaldehyde and ketonic compound. Aldehyde, and this is polyhydroxyketonic compound. So those compound which on further hydrolysis give these type of compounds, so then those compounds are like sucrose is also known as the carbohydrates. So this is the main definition. Then they are also called as the saccharides. यानी हम उनको saccharides भी बोलते हैं. Why? Because in the saccharides it is a Latin word, that is the saccharum, and the saccharum means the sugar, due to the sweet taste of a simpler member. Depending upon their behavior towards hydrolysis, carbohydrates can be of the following 3 types. It means we are studying here its classification. We are now going to discuss the classification of carbohydrates. So in the first classification, we will divide carbohydrates into the 3 categories. That is the monosaccharides. That is the first one is the monosaccharides, and the second one is oligosaccharides, or maybe disaccharides. Oligosaccharides or maybe disaccharides, and then polysaccharides. So these
are the three main classification. In some books you can get that these are four classification, like first one is monosaccharides, then second one is disaccharide, third one is oligo, and then fourth one is polysaccharides. And so basically, what is monosaccharides? Monosaccharide means these cannot be hydrolysis to simpler molecule and further subdivided into tetrose, pentose, and hexose depending on the number of carbon atom. These are called as the homopolysaccharides. For example, you have aldotetrose. These are those type of monosaccharides. See, monosaccharides means mono means single. Mono means single and saccharides means carbohydrate. So these are some single type of carbohydrates which on further does not give you any other sugar. It does not give you any other sugar compound. For example, if we have aldotetrose, aldopentose, aldohexose, and ketohexose, like glucose, galactose, fructose. So basically, like glucose, we have glucose. On hydrolysis, it can give you CO2, carbon dioxide plus water, and any other extra compounds, right? So this does not give any other sugar. This does not give any other carbohydrates part. So basically, these are known as the monosaccharides or the single saccharides, right? Now the next one thing is that is your oligosaccharides. On hydrolysis they generally gives 2 to 9 monosaccharides. 2 से 9 के बीच में ये monosaccharides को release कर सकते हैं. Like अगर वो 2 release करता तो then we can say this, like if 2 saccharides can form from the one saccharide, then maybe it is known as the disaccharides. And further it can classified into the trisaccharides and up to 10 members, right? So Greek word oligo means a few. It means a carbohydrates give you few other carbohydrates on the hydrolysis. For example, you have sucrose, and sucrose on hydrolysis gives you glucose plus of fructose. ठीक है? तो सुक्रोज आपको जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इट गिव्स यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको रिलीज फॉर्मेशन करता है ये. तो इसका मतलब ये है इट ए टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स. ये क्या है? डाइसैकेराइड्स का एक टाइप है, राइट? सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड्स. सो बेसिकली इसी तरह से आगे है लाइक हम एक थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स मीन्स क्या होती है? Carbohydrates that on hydrolysis gives you further up to n number of carbohydrates. तो 10 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं या फिर उसमें डिफॉर्म हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाती है. दैट इज नोन एज योर पॉलीसैकेराइड. सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन. दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन थी. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. This is very important classification, reducing and non-reducing sugar. Reducing and non-reducing sugar. So please understand this well. So let's understand the definition what it says. See, reducing means it work as a reducing agent. Like reducing means it work as a reducing agent. कोई शुगर, if any sugar carbohydrates can work as a reducing agent, then this is known as the reducing sugar. And if this cannot work as a reducing agent, then this type of sugar is known as the non-reducing sugar. So अब reduce किसको करते हैं? For example, अभी आपने पढ़ा like carbohydrates में ना aldehyde and ketonic compound है. aldehyde और ketonic के compounds होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं हमारे, वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है. नाउ वी हैव रिड्यूसिंग शुगर. सो रिड्यूसिंग शुगर मींस इट कैन रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट. वी आर गोइंग टू टेक प्लेस हियर टू रिएजेंट, दैट इज द टॉलरेंस रिएजेंट एंड द सेकंड रिएजेंट इज फैलिंग सॉल्यूशन. सेकंड रिएजेंट इज फैलिंग सॉल्यूशन. यानी अगर कोई शुगर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकती है, इफ इट इज कैपेबल टू रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट, इफ इट इज कैपेबल टू रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट और इट इज कैपेबल टू रिड्यूस द फैलिंग सॉल्यूशन, देन दिस इज नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर. सो
रिड्यूसिंग जो शुगर होते हैं हमारे पास, वो टॉलरेंस रिएजेंट में हमारे टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और फैलिंग सॉल्यूशन में भी टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव ही देते हैं. नॉन रिड्यूसिंग शुगर gives you a negative test for the tolerance reagent and the negative test for the failing solution. Let's understand these tests in very detail. I am explaining the tolerance reagent test. In the tolerance reagent test, you have to take the tolerance reagent in a test tube. For example, you have to check a sugar. I am giving you a type of compound, a type of any carbohydrates, a type of any sugar, and you have to check whether it is reducing or whether it is non reducing. So आपने यहाँ पे a type of sugar को यहाँ पे लिया, ठीक है. Then you added here tolerance reagent. Then आपने यहाँ पे tolerance reagent की addition की. Then you added up here tolerance reagent, right? You added here tolerance reagent. आपने यहाँ पे addition किया. See, अब उसके बाद क्या हुआ देखो. Tolerance reagent generally contains the silver. Generally contain the silver and some ammonical solution of silver. Ammonical solution of silver. Ammonical solution of silver, that is your Ag. And complete formula of tolerance reagent can be written as like AgNH3 the whole twice and OH. I am assuming that in the tolerance reagent Ag, silver is present in the Ag positive oxidation state. That is the one positive oxidation state, one positive. So, if the carbohydrates can able to reduce the tolerance reagent, so it means the oxidation state of Ag positive will reduce from the positive one to any other. Maybe it reduce to the Ag0, from the plus 1 it will reduce to 0. Ag positive 1 से 0 oxidation state में अगर capable हो जाता है, then this is known as the reduction of Ag take place. So reduction अगर होता है, इसका मतलब आपका जो sugar था A था, उसने as a reducing agent की तरह behave किया है. So हमने जब क्या किया, हमने टॉलरेंस रिएजेंट लिया. सी हमने एक टाइप ऑफ शुगर है, वो हमने अपनी टेस्ट ट्यूब में ली, उसको क्या कि थोड़ा एक्वस किया, यानी कि उसको डिसोल्व किया, ठीक है, यानी वाटर के प्रेजेंस में हमने उसको क्या किया, डिसोल्व किया. देन हमने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट को एडिशन किया. टॉलरेंस रिएजेंट को हमने डायरेक्ट इसमें एडिशन किया और फिर हमने इसको बॉइलिंग वाटर पे हीट होने के लिए रखते हैं, यानी कि बॉइलिंग वाटर है हमारे पास, बॉइलिंग वाटर में हमने इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया ऐसे बॉइल होने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाए, हीट रिएक्शन है टेक प्लेस करे, ठीक है. अब उसके बाद यानी कुछ टाइम के बाद अगर मेरा क्या कि सिल्वर मिरर यानी टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है कि अगर वो रिड्यूस हो जाता है, इफ द टॉलरेंस रिएजेंट गेट रिड्यूस, इट मींस Ag पॉजिटिव है, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरा जो Ag है यानी कि Ag अब क्या कि सिल्वर है और सिल्वर मेरा बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में आ चुका है, तो वो एज ए मेटल एक तरह से बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द टॉलरेंस रिएजेंट और वो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ यानी कि एक क्या कि सिल्वर की लेयर बना देगा, यानी कि Ag की लेयर है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ, ठीक है. एंड देन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है आपकी वो एक तरह से सिल्वर की तरह बिल्कुल शाइनिंग करना स्टार्ट कर देगी. दैट इज नोन एज द सिल्वर मिरर टेस्ट, एक मिरर की तरह चमकेगी. दैट इज नोन एज द सिल्वर मिरर टेस्ट. अगर ऐसा हो जाता है यानी कि टेस्ट ट्यूब है वो सिल्वर मिरर की तरह, यानी कि अगर वो चमकदार हो जाती है, देन हम बोल सकते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट यहाँ पे पॉजिटिव है. और टॉलरेंस रिएजेंट अगर पॉजिटिव है तो जो आपका ए टाइप का शुगर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग शुगर था, ठीक है. देन ए टाइप ऑफ शुगर इज ऑफ योर रिड्यूसिंग शुगर. सिमिलरली अगर हम यही करते हैं ए टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए, अगर हम यही करते हैं फॉर द फैलिंग सॉल्यूशन, अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है कि आपने सेम वही अपरेटस अप्लाई करना है. लाइक आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें ए टाइप का आपने जो कंपाउंड है वो लिया, सैंपल लिया, आपने उसको डिसोल्व किया. उसके बाद फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं आपके पास लेबोरेटरी में, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है. फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी को आपने इंटरमिक्स किया, यानी कि 50% बोथ लिए, 50-50 इक्वली मोलर मिक्सचर में आपने लिया 50%, यानी ठीक है. तो फिर उसका सॉल्यूशन आपने अच्छे से मिक्स करके वो आपने इसके अंदर डिसोल्व किया और फिर आपने इसको बॉइलिंग वाटर पे रखा, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग बाथटब वगैरह में आपने इसको रखा, ठीक है. अगर वहां पे यानी टेस्ट ट्यूब में क्या कि जो लास्ट में बिल्कुल अगर रेड कलर के, इफ द रेड कलर पीपीटी रेड या फिर रेडिश ब्राउन,
रेड और रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर फॉर्म हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑफ द कॉपर ऑक्साइड दैट इज Cu2O। अगर कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है देन दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ए टाइप का शुगर है वो टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर सकती है और फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकती है, देन दिस इज नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और अगर उसने टॉलरेंस रिएजेंट में यानी कि सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं की देन दिस इज ए टाइप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी उसने टॉलरेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव नहीं दिया, वो रिड्यूस नहीं कर पाई। अगर वो रिड्यूस नहीं कर पाई तो हाउ इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर, कैसे एक्ट करेगी? अगर वो किसी चीज को यानी टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई टेस्ट है हमारा एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड होते हैं, तो एल्डिहाइड हमारे जनरली क्या होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, तो वो एज ए रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो सिमिलरली आप बता सकते हो लाइक अगर मेरे पास क्या है कि डी ग्लूकोज है तो वो मेरा बिहेव करता है एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह, रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करता। तो ये एक मेन क्लासिफिकेशन थी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। सो बेस्ड अपॉन द स्टडी करते देखो, बेस्ड अपॉन द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Carbohydrates reduce failing reagent or tolerance reagent are termed as reducing carbohydrates. Example, all monosaccharides and disaccharides except sucrose. सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स है वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करते हैं, बट द कार्बोहाइड्रेट्स which does not reduce such reagent are known as the non-reducing carbohydrates. Example, sucrose and polysaccharides. So polysaccharides हमारे पास जनरली कैसे होते हैं जो रिड्यूस नहीं कर पाते, राइट। Then and third classification is your sugar and non-sugar. So carbohydrates को हम define कर सकते हैं, classify कर सकते हैं into other two categories, that is the sugar and non-sugar. So on the this is very simple category, nothing more. In the basic of their taste, carbohydrates are classified as sugar and non-sugar. The monosaccharides and oligosaccharides having sweet taste are collectively known as sugar. ठीक है, जो शुगर इन टेस्ट यानी कि स्वीट इन टेस्ट में है तो हम उसको शुगर बोलते हैं, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है और जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, जो वाटर में इनसोल्यूबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं, यानी कि वो इनसोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, ये इसके सारे एग्जाम्पल है, जो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, देन हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सिंपल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च with hot dilute mineral acid and by hydrolysis of sucrose. For example, you have sucrose plus of H2O. ठीक है, on hydrolysis that in the presence of acid that is the H positive की formation में या फिर presence में acid की presence में हमने इसको hydrolysis किया तो it will give you glucose plus of fructose. Glucose is of the aldehydic type compound and fructose is of the ketonic type compound. Right? It's a type of compound of ketonic. ठीक है, on further the starch or cellulose on n number of water molecules, it also can reduce and it gives the n number of glucose monomers or n number of glucose carbohydrates, right? So ये basically क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का एक वे है। देन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग मोर। क्या है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग द एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और जो कीटोनिक टाइप के कंपाउंड्स है वो एक तरह से साइक्लिक या फिर हेमी एसिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द, आपका क्या होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा और बीटा फॉर्म बन जाती है वहां पे। ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन। सो हेमी एसिटल फॉर्मेशन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो पार्ट टू में, इसी के पार्ट 2 में हम अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।